Boil and Broil. An Ashtalakshmi food journey. Hello viewers, this is UD and I welcome you all to your favorite show Boil and Broil, and I am at Gauripur today. Gauripur is a place which is well known for the kings. Yes, you heard it right. Well, I need to know each and everything about the history of Gauripur, right from the King Pratap Chandra Borua and his legacy, and of course good food. Now, you can see this beautiful bungalow behind me. This is called Hawa Khana. And it is believed that all the royal families used to come on their vacations or maybe on their leisure time to spend some quality time here with their families. Be merry and party, of course. And the important thing about this house is that the legendary Padma Shri singer, late Pratima Borua Pandey, used to stay here. And she is popularly known for her Loko Priya Gwalpariya Geet, who are popular across the country. And I'm very excited here because I'm at her place to know more about their culture, to know more about their tradition, to know more about their food, of course. Well, my friend Abhijit Borua is waiting here for me. So I'm going to meet him right away and he's going to guide me throughout my journey. So let's go. हेलो अभिजीत। नाइस टू मीट यू। सेम है, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। और आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने आपका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाला और हमें दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और अभिजीत, जैसे कि मैं आया हूँ, इतनी खूबसूरत शहर है आपका गौरीपुर, मुझे हर एक हिस्सा देखना है। डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ के राजघराने हैं, वहाँ से लेके यहाँ के खाने से लेके यहाँ के ट्रेडिशन तक, आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली। श्योर श्योर। चलिए आइए। Matiabag Rajbari or Matiabag Palace is in Gauripur in Dhuburi district of Assam. It is a beautiful palace at Matiabag Hill on the bank of the river Godadhar. Because of this, it is called Matiabag Rajbari. It was used as Hawa Khana by the zamindars of Gauripur. It was also the residence of Padma Shri late Pratima Borua Pandey, the great Gwalporiya Lokogit singer, and Parboti Borua, the elephant queen, also called Hasti Kanya. It was used as a residence by famous pre-independence era actor and director Devdas movie famed late Pramathesh Chandra Borua. This palace exhibits a unique structure and architecture in the region. But sadly, if no one looks after these palaces, it might get ruined soon. This is the palace of Princess Niharbala Borua and he is Mr. Rahul Borua, grandson of Princess Niharbala Borua. Oh, namaste sir. How are you? Fine.
Please take. It's our welcome drink. Thanks. Great. Please. It's lemon and honey. Lemon and honey. How is it? Tasty. Okay. Very soothing. And good for your stomach. I know, I'm sure. Then. क्या आप मुझे सब दिखा सकते हाँ, okay. Let's go. चलिए. Beautiful. So I'm at the palace of Princess Nihar Bala Borua, and I'm really fascinated to see all these beautiful collections of art. Well, right from terracotta to many more miniatures of different things, and most importantly, few things which are very catchy, which I like the most is I can see there are so many tiger skins, heads of different animals. It was believed. I mean, I know it's the truth that she was a big hunter as well, and she was known as the lady hunter. Lady hunter. Right? Yes. और बताइए सर. यह है निहार बाला बरुआ, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ राजा प्रभात चंद्र बरुआ. Okay. वो सिर्फ हंटिंग ही नहीं करता था, उसके साथ साथ उनके और भी शौक थे. जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक अलमारी है जो पूरा अलमारी यूरोप कलेक्शन से भरा है जी. और यहाँ पे सब सीसेल और यहाँ पे सी प्लांट्स आप देख सकते हैं. Yes, yes. इसके साथ साथ दुनिया के हर एक जगह से कुछ ना कुछ कलेक्शन उनके पास होते थे. और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच की एक ऑस्ट्रिच एग और डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स के एक आप यहाँ पे देख सकते हैं. और ये प्रिजर्व किया हुआ स्नेक भी देख सकते हैं आप जी. ये लेपर्ड कब्स, हाँ देखा मैंने वही. और ये बाप रे, टास्क ऑफ द एलिफेंट. हाँ. और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इस पे आप नोटिस कर सकते हैं ग्वालपरिया राजकन्या निहार बाला बरुआ. ये सारा उन्होंने हंट किया था. हाँ, ये yes. सब जितना भी है. यस. यहाँ पे जो भी टाइगर हेड्स है. हाँ आप देख सकते हैं. Wow, there's a very fascinating and very interesting story about it. She had a pet snake which she used to tie around her hand, or sometimes हाँ. she used to use it as a headgear as well. Yes. And that's the snake, right? हाँ. Right. It's a green viper. That was her pet. Interesting. Mohamaya Temple is built by the Zamindars of Gauripur. The design and the architecture of the temple is very ancient and unique in its way. But if not looked after, it will become a ruined monument. Wow. आप जानते हैं आप कहाँ पे है? Can figure it out. रुक्सी एयरपोर्ट है. Abandoned completely, na? Completely abandoned. Established on 1937 Wow. at the time of Second World War. Interesting. और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इसको एक पब्लिक एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं. Okay, so Airport Authority of India overtake कर लेती है from British Airport, मतलब British Authority. अच्छा. और उसके बाद 1981 तक ये एयरपोर्ट रनिंग पे रहता है. 1981 तक ये functional था पूरा. Functional था. उसके बाद बंद हो जाता है. Wow. So this airport has been abandoned since last, I can say, 35 odd years, and it's jungle everywhere now. The last flight landed here was in the year 1981. ये कंट्रोल रूम था ना? ये कंट्रोल रूम था. और अभी भी यहाँ पे एक एयर अटेंडेंट, उनका नाम है इंद्रजीत कुर्मी, अभी भी है यहाँ पे. आफ्टर रिटायरमेंट वो यहाँ पे ही बस गया. This is actually interesting and original. The very old air attendant is still here. How old is it? He is almost 99 years old. My goodness, almost 100.
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज, श्योर। आइए। This is my immense pleasure, ladies and gentlemen, that I am talking to the living legend, I would say, Mr. Indrajit Kurmi, जो कि रूपसी एयरपोर्ट के एयर अटेंडेंट थे, and he is very old now and very sick. पर इन्होंने इस जगह को अच्छे से देखा है। जब से यहाँ पे एयरपोर्ट था, प्लेन्स के उड़ते, प्लेन्स के लैंड होते से लेके खाली खंडहर बनने तक, he has seen everything. Well, viewers, I'm at the Ashari Kanti Terracotta office, and with me he is one of the renowned terracotta artists, Mr. Dev Daswal, and I have few queries regarding terracotta. So, मैं इन्हीं से पूछता हूँ. Hello sir, नमस्ते. नमस्ते। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये जो आप लोग का आर्ट है टेराकोटा, ये कैसे, कब से चल रहा है? सबसे आगे ये बोलूँगा, हमारा जो ये गांव है, ये गांव बहुत प्राचीन है और भगवान का आशीर्वाद है, धर्म गुरु का आशीर्वाद है। फिर ऐसा क्या है, जो जब टाइम चेंज हो जाता है उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। इस गांव में नेक्स्ट जो अभी जो प्रेजेंट जेनरेशन जो है, प्रेजेंट जेनरेशन में तो टेराकोटा का अभी जो काम कर रहा है धीरेन्द्र नाथ पाल, उन्होंने हमारा गांव का जो टेराकोटा है चारों तरफ फैला दिया। इससे पहले नीलिमा बुरुआ नाम के एक महिला थे। हमारा यहाँ का जो मोस्ट ट्रेडिशनली डॉल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जी जो डॉल है, एक मूर्तियाँ माता गॉड ऑफ इंडिया, उनका नाम उन्होंने नामकरण किया है हातिमा डॉल। हातिमा डॉल तो वो देके हमारा ये नाम देके प्रेजेंट आज का तारीख में उस नाम से सारा दुनिया में वो मूर्तियों का मशहूर है और हमारा गांव का मशहूर है। चलिए आइए हम हमारा ट्रेडिशनल टेराकोटा का काम दिखाते हैं। Well, I always had a dream since childhood to dine with the king and the queens. But unfortunately, that cannot be done because of the obvious reasons. Time has changed completely. But I'm lucky enough to get the opportunity to dine with the royals here. And so much of food, and trust me, viewers, the smell is making me go die and eat till death because it's smelling so good. And so much of food. My favorite place on earth. The table where the food is served. So, thank you. इससे start करें. ये आप क्या दे रही हैं? खार। खार, alkaline, which is very good for your health. सबसे पहले खार खाइए, फिर आप कुछ भी खा सकते हो. It will help to digest everything. Then I can see it's kheer. It's supposed to be the dessert, but since I don't follow any rules, I can taste anything. Very sweet and very tasty. Now I can see they have mutton here. Smells so good. और ये है fish, right? Now viewers, this is prawns, cooked with coconut, tender coconut. Yeah, they put inside the coconut. They cover it up with the coconut leaf, then put poppy seeds, right? And cook it inside the coconut on charcoal, like oven. Wow. And that's my favorite greens. It's ferns. Ferns are very healthy. I love it. ये मैं खुद ही ले लेता हूँ थोड़ा सा. Very nice. Thank you. आपका favorite कौन सा है? मछली। आपका कौन सा? Fish. You like fish? उनको फिश पसंद है. वेरी गुड. मुझे अगर कोई पूछे कि क्या फेवरेट है आपका, मैं सिर्फ बोलूँगा खाना.
चाहे कुछ भी हो। आप लेंगी ये आलू भाजा? हाँ অল্প অল্প? That means little. क्यों? कुछ बच गया क्या मेरे हाथों से? Oh yes. There's a saying in Hindi, बगल में छुरा शहर में ढिंडोरा. Well, this is stiff rice, you said, right? Yeah, stiff rice. With jaggery, curd, and cream. It's called mathur. It's called mathur. Mathur. Yeah, they call it mathur. Yum. So got two desserts basically, one kheer and one mathur. Mathur. Wow. Very nice. And there are puri as well. Ye raha puri. Wow. So You try this with kheer. puri with kheer? Yes. Okay. Good. Very good actually, I love it. Tastes good with puri. And all the dry fruits here would enhance the taste of it. Wow. What flavor. Perfect. I'm feeling so shameless. I'm eating and they're watching at me. आप लोग please खाइए. See, this is the only reason I didn't get a chance to dine and eat with the royals, because I didn't follow any of the rules. When there is food, I cannot wait. I'm so sorry. Chaliye, hum khaye? Okay. My bad. But the food is good. That's the point. And bon appetit, ladies and gentlemen. তোমার ডিঙা আইলো রে জোর বৈঠা বয়া বাইর করো চাইলুন বাতি ডিঙা না বরিয়া তোমার ডিঙা আইলো রে চালমতি ধরি মারিয়া রে চালমতি ধরি মারিয়া রে আর বাইর হইয়া দেখো রে বাইর হইয়া দেখো রে তোমার ডিঙা ঝিকি আইলো রে আরে তোমার ডিঙা ঝিকি আইলো রে তোমার Memories are what I'm going to take with me my way back home, which I'll cherish throughout my life. So much of history, so much of knowledge. I have learned everything today. So much which I would say the history will haunt me forever. It's so fascinating. I had a great time here in Gauripur, and it's my time now to say goodbye from today's episode. Well, Abhijit, thank you so much. Thank you. Thank you so much for your hospitality. बहुत अच्छा लगा. Welcome, please. अरे, thank you so much. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. And viewers, finally it's time for Yuri to say goodbye from today's episode. I'll see you again in the next episode. Some new place, some new food, and some new friends to make. Till then, you all stay hungry, and I say goodbye. Bye.